Good morning to both of you, and welcome to this session of Airlines and Airport Marketing Management. And as per our today's plan, we are going to discuss the unit number 4, and topic of discussion under lesson number 25 will be the process of marketing research. So today, this will be almost the last lecture in the series of marketing research in our aviation. And today, that is a very, very important part of this process of marketing research, because marketing research is nothing but it is considered a process in which the information is gathered in order to increase their market share. Similarly, in order to increase their revenue. Similarly, in order to increase the new product, introduction of new product, improvement of existing projects. So many, we have discussed so many advantages of marketing research in our scenario. Similarly, we have also discussed that in the airlines industry, in particular, this tool of marketing research is very, very important in order to improve our customer service index of every airline wish to improve their customer satisfaction index in order to gain the market. Similarly, airports operators also try to improve their service level in respect of passenger satisfaction index, and that is known as globally that we are considering it is a very, very important to improve the passenger satisfaction index that is in the scale of 1 to 5. So all these are nothing but a process of marketing research. Through process of marketing research, we can achieve this ultimate target of the improvement in our product or improvement in our services, and with the ultimate commercial goal of any organization, including aviation organization, to earn the profit for their investor, for their stakeholders. So this is all about basics of the marketing research process, because marketing research is nothing but it is considered a process. So let's see. We'll discuss first I will share the chart, a flow chart in which the basic steps of marketing research is carried out. This is the flow chart, and basic 5 steps. Though any of the steps can be further extended. So, but there are the basic 5 steps in marketing process are considered by the various authors, marketing gurus like Philip Kotler. So these are, first one is problem defining. Then we'll discuss one by one what are these 5 steps. And the first one is a problem defining. Second one is research, defining research objective. First we have to define the problem, then we have to set or we have to define the objective of the research. Then developing a research plan. Third step in the process will be developing a research plan. Fourth steps in the marketing research is data collection and analysis. Then last, 5th is nothing but a report or finding presentation to the top management. So these are the 5 basic steps are considered in marketing research. Let me take your attendance, then we'll continue our discussion on each of these steps. So I'm taking your attendance for sake of my records as well as IMS record. So let me take your attendance, then we'll continue our discussion. So now let's discuss one by one in brief. Then I will also share a video in a simplest way so you can understand what is marketing research process. And the motto behind is that with constant change being the norms in marketing and the business, one thing remains the same, that is the need of marketing research. Marketing research is helpful tool for organization to better
identify marketing strategies, and evaluate business decisions using the data which is available from the marketing research. And just as you would not go on the vacation without making any plan, you should not design marketing strategy without baking them with research and data. In short, the marketing research process is the backbone of informed business and marketing decisions. So this is the rationale behind marketing research and following the process. And you might be surprised to hear that the marketing research is one of the first thing that organizations cut from their marketing budget because of high time and sometimes money investment. This is not the best decision, especially when your company is planning to launch a new product or venturing into new market. As some savvy startups have learned, marketing research does not have to be expensive if you have to do it right and follow the right process. So marketing process is a very, very important in respect of the any organization, in any startup, any joint ventures. So let's discuss one by one the each step of 5 steps what we have seen in flow charts above. So let's discuss one by one what are the each step are comprising of. First, define the problem or opportunity. It may be problem, it may be you can maybe consider it an opportunity. So defining is a very, very most important part of marketing research process. And in order to do any research and collect data, you have to know that you are trying to learn from the research. In marketing research, defining the problem you need to solve will determine what information you need and how you can get the information. So this will help your organization clarify overcharging problem or an opportunity, such as how to best address the loss of marketing share or how to launch a new product to a specific demographic, to a specific target group. Developing questionnaires that will allow you to define your problem or opportunity and examine all potential causes so as to that the researcher can whistle down all the information you actually need to solve the problem or determine what action to take regarding an opportunities. Oftentimes there are questions about your largest market or ideal buyer persona. For example, what does your ideal customer like? These might include questions about demographics, what is their occupation, what they like to do in their spare time, anything help you to get a clear picture of your ideal buyer persona is considered as many variables and potential clauses is possible. So this is in nutshell, it is the nothing but a first is defining a problem or defining an opportunity on which you want to further proceed towards your marketing research process. And after that, after defining the problem or your opportunities, now in the second step, what you will do, you will develop your marketing research plan, because planning is also required before going to further into action. So after you will examine all potential clauses of the problem or opportunity and use those questions to boil down exactly what you are trying to solve. And it is time to build the research plan. Your research plan can be overwhelming to create because it can include any methods that will help you answer the research problems or explore an opportunity identified in first step of defining the problem or defining an opportunity. To help you develop the research plan, let's review few techniques for conducting research. Now you are doing to conduct some research, then under the planning, you have to prepare the entire marketing research plan. And what does it is comprising? Interview, prospects and customer. Oftentimes you will get best feedback by using the tactics. You are going straight to the source. So you are directly interviewing to your source, means customer or your service provider.
This might take a form of focus group, one-to-one interview. Use define research problem to select the right people to interview. So first, first of the techniques used in marketing research process is to take interview of prospects or prospective customer. Then conduct a survey using survey of survey. This is using the Survey Monkey or another tool. It is conducting a survey is nothing but also considered collecting of data, primary data. Then run your user test on your website or landing pages. Then you have to do this. After collecting, then you have to do the trials. And this is a cost-effective approach that can provide a lot of insight about data and how your customer or potential customer behave or respond to something. Because you are conducting interview or you are conducting survey, then you have to do the stock of the data you are collecting, whether it is new messaging or branding or modified product or services you are thinking about often. Simple A/B test or go long way. You take any type of test or survey methodology, and there are a lot of tools are available. Use heat mapping tools such as Hotjar or Lucky Orange. There are a lot of website analytical tools are also available, such as Google Analytics or HubSpot Analytics to track result depending upon the what data you are need to collect. So this is some you have to use the tools, and I have illustrated the examples of latest tool available from the analytics point of view, artificial intelligence point of view. Lot of tools are available in order to plan your marketing plan, marketing research plan, and use of tools and collection of data. So this is the second step in which you are planning your marketing research plan. Then come the next step is through these tools. What you are doing in the third step, collecting relevant data and information. So after planning your marketing research process plan, now you are in the third step, you are collecting relevant data and information. In marketing research, most of the data you collect will be quantitative numbers or data versus qualitative. We have discussed in our aviation, the type of data we normally collect is qualitative data, which describe and basically which is descriptive and observational. Qualitative data will be observative data, whereas the quantity data will be numericals, or that will be descriptive, which can be further processed and analyzed. And you will gather a mix of two types of data. For example, you might run a A/B test on your website to see if a new pricing tier would bring you more business. This is mostly do these types of A/B test in our airline ticketing pricing mechanism. And in that research study, you might also interview several customers about their about whether or not the new pricing tier would appear to be them. This way, you are receiving hard data and qualitative data that provide more color and insight. When collecting data, make sure it is valid and unbiased. You should never ask researcher interview. You will think that we should offer a higher pricing tier with additional services. Correct? This type of question is designed to influence the way the person responds. Try asking both open-ended and closed-ended question. For instance, a multiple choice question asking what income range best describe to you. So such the collection of data also need a certain caring in regard to their collection and the quality of data you are collecting. So this is the third step in which you are collecting the relevant data and information in marketing research process. Then after collecting the data in the fourth step of marketing research process, what you are doing, you are analyzing data and report finding. What you are doing now, you have been gather all information you need. It is time that the fun part, that is analyzing the data. Although one piece of information or data might jump off at you,
it is important to look for trends as possible to specific piece of information. And as you are analyzing the data, don't try to find pattern based on your assumption prior to collecting the data. Sometimes it is important to write up a summary of the study, including the process you follow, the result, the conclusion, and what steps you recommending to take based on those results. Even if you did not need a formal marketing research report, be sure that you are review the study and results so that you can articulate the recommendation course of action. Sharing the charts and data you collected is pointless if it does not lead to an action. So what your hypothesis proven wrong when you define a problem, whether it is wrong or right, great. That's why you are testing, and don't run with assumption when making decision that could be a major impact on your organization. It is always better to take the results as they are than to twist the data to prove yourself right. So this analysis of data and finding a conclusion or a recommendation is this is the fourth step, which is very important. Then lastly, you will put your research finding into action. Your research is complete. It is to present your findings. So presentation, your finding and take action. So many times you will only give the suggestion, then action has to be taken by your top management. But it need a presentation. Whatever you define the problem, collecting the data, analyzing the data, then in the last step, you have to make a presentation to the top management. And in the form of the analysis, finding, then recommendation. Then the put into action, you will put an action plan. Many times the management wants the recommended action plan to implement your findings. So start developing your marketing strategies and campaigning. Put your finding into test and get going. The biggest takeaway that although this round of research is complete, it is not over. So this action plan is rest with the management decision. And once you put up your action plan to the top management, and when they give the go ahead with the help of the team, you will put all your research into action, and you will see that you are getting the desired results. What have you planned, what you recommended, you will turn into the action. In this way, this complete action, complete your research process will into your action. Now, whatever we have discussed, let's see in a simple way of we can say I will present in another form. That is, you will see that what we have discussed in a simplest manner in Hindi. So I am sharing one such process in Hindi. So let's see. I will share that video with you. Are you somebody who's always desired to become a speaker trainer coach? Are you some So let's see one small video which will give the clear picture of how this research process is carried out. क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, किन-किन प्रोसेसेस को हम फॉलो करते हैं जिसमें पूरा एक मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट किया जाता है. ठीक है, शुरू करें. तो पहला स्टेप मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव कि हम ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है जिसकी हम सॉल्यूशन जानना चाहते हैं. एक एग्जांपल प्रॉब्लम हो सकता है जो कि बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में कंपनीज रिसर्च करती हैं, कंडक्ट करती हैं. पहला एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारी सेल्स क्यों गिर रही है, राइट.
ये जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी के सेल्स डिक्लाइनिंग में है, अगर गिर रहे हैं, तो क्यों गिर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, ये एक हो सकता है। दूसरा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है कि what is the perception about our brand among our customers or within the market? मार्केट में लोग हमारे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, ओके उनकी परसेप्शन क्या है हमारे ब्रांड के प्रति। तो ये जानना अगर हम चाहें तो ये भी हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तीसरा एक एग्जांपल देता हूं, लाइक हमारा कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट में। दैट इज टू से, अगर मैं किसी एक सेगमेंट में हूं, कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो डिजर्विंग माय कॉम्पिटिटर मेरी पोजीशन क्या है, ओके क्या मैं एक लीडरशिप पोजीशन में हूं, या मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे ज्यादा मार्केट में प्रेवलेंट है, कॉम्पिटिटर की मौजूदगी मुझसे बेहतर है, क्या है, ओके तो मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। अगर हम ये जानना चाहें तो ये भी हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो पहला क्या हुआ, पहला चीज हुआ व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई डू आई नीड टू कंडक्ट दिस रिसर्च। तो ये रिसर्च करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो अगर हम ये कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी पर्पस, उसकी रीजन, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहला और प्रमुख स्टेप होता है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का। फाइन, आते हैं दूसरे स्टेज पे, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लान होता है कि दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर मुझसे पूछिए दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है टू डेवलप अ रिसर्च प्लान। ये बहुत ही एक इलैबोरेट प्रोसेस है, ओके ये वाला स्टेप जो है बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। हमारे रिसर्च करने के अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग प्रोसेसेस क्या होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मैं इसमें क्वालिटेटिव स्टडी करूंगा या क्वांटिटेटिव स्टडी, ओके अगर मैं क्वालिटेटिव स्टडी की बात करूं तो क्या मैं इसमें कस्टमर्स पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करूंगा, या कस्टमर्स के साथ एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू करूंगा, कस्टमर्स के साथ बैठकर बातचीत करूंगा। कस्टमर्स जब स्टोर में खरीदने जाते हैं तो उनके पीछे मैं जस्ट ऑब्जर्व करूं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो उसमें क्या क्या देख रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं खुद से ऑब्जर्व करता हूं, या एक कैमरा लगाकर उसमें से ऑब्जर्व करता हूं, ओके ये सारी चीजें होती हैं एक क्वालिटेटिव टेक्निक, ओके। एक क्वांटिटेटिव टेक्निक भी हम कर सकते हैं जब हम रिसर्च प्लान बनाते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक में हो सकता है कि मैं एक सर्वे कंडक्ट करूं, मैं एक क्वेश्चनर बनाकर लोगों को दूं और कहूं कि इस क्वेश्चनर को फिल करें, और मैं उस क्वेश्चनर से जो डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए एनालाइज करूं, ओके तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉलो करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चनर भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा पूरा काम होता है हमारा प्लान में, डेवलपिंग अ रिसर्च प्लान, ओके। तो हम जब प्लान बना रहे हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाती है कि मेरा रिस्पोंडेंट क्या होगा, ओके कौन, किस पर मैं ये रिसर्च करूंगा, ओके कैसे मैं अपना सैंपल चूज करूंगा, सैंपल सेलेक्ट करूंगा, उनसे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, क्या वो एक क्वालिटेटिव तरीके से कलेक्ट करूंगा या एक क्वांटिटेटिव तरीके से कलेक्ट करूंगा, तो मेरा सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ओके ऑब्जर्वेशन करूंगा, इंटरव्यू करूंगा, एथनोग्राफी करूंगा, या फोकस ग्रुप इंटरव्यूज करूंगा, ये सारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गए, ओके। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या मैं सर्वे करूंगा, अगर सर्वे करूंगा तो क्वेश्चनर बनाऊंगा, ओके क्वेश्चनर में कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो ये पूरा जो हो गया ये हमारा हो गया एक डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, ये मेरा सेकंड स्टेप था, ओके। थर्ड स्टेप में आते हैं, ओके इन द थर्ड स्टेप इट इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन।
मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ओके, तो यहाँ हम कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्वेशन के जरिए कर सकते हैं, कस्टमर्स से इंटरव्यू करके कलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स जब वो शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं मॉल में घूम रहे हैं हम उनको कैमरा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उनको एक क्वेश्चनर देकर ये भी कह सकते हैं कि इसे फिल कर दीजिए, और इस तरह से भी हम उनसे इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, मेरे 4 स्टेज में हो गया एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मेरे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ओके, तो क्वालिटेटिव डेटा जैसे कि टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं 2 प्रमुख सॉफ्टवेयर्स को रेकमेंड करता हूं। एक सॉफ्टवेयर है NVivo। ओके, नाम याद रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर है NVivo। तो NVivo सॉफ्टवेयर से क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं हम Atlas TI। ओके, तो Atlas TI भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही जाना माना सॉफ्टवेयर है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो क्वालिटेटिव के लिए 2 सॉफ्टवेयर कौन से हुए? एक हो गया आपका NVivo, दूसरा हो गया आपका Atlas TI। ओके, इन 2 सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ज्यादातर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट किया जा सकता है। ओके, आप कुछ विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं। ओके, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सारे बन सकते हैं। ओके, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आते हैं, ओके, जब हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की भरमार है। ओके, आप सीधा एक्सेल से भी कर सकते हो काफी सारी चीजें। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही पावरफुल, प्रभावशाली सॉफ्टवेयर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इसी तरह आपके पास दूसरे कई सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका हो गया IBM का SPSS हो गया, जो एकेडमिक्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आज की डेट में आपके पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे R हो गया, R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उस पर भी काफी सारा बेहतरीन एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, मेरे चैनल पर आप R के ट्यूटोरियल्स भी काफी सारे आप देख सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो R के काफी सारे ट्यूटोरियल्स। ओके, एंड आप इसके लिए पाइथन भी यूज कर सकते हो। ओके, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए तो 2 ही सॉफ्टवेयर्स थे, लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात आती है तो आपके पास सॉफ्टवेयर्स की भरमार है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो आप आसानी से यूज कर सकते हो और उससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, देन आता है आपका प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग्स। ओके, जो आपने एनालिसिस किया, जो आपने डेटा कलेक्ट किया, ओके, उसको जब आपने एनालाइज किया, अब उस आती है बारी उसको प्रेजेंट करने। ओके, आप किस तरह से अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करते हो? क्या आप अपने प्रोसेस जो आपने एनालाइज किया उसके आउटपुट्स को प्रेजेंट करते हो, या उसका इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट करते हो, या उसको एक सिंप्लीफाइड ग्राफ्स में बना के, सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशंस बना के, जिससे कि एक लेमैन को भी, ओके, एक लेमैन को भी ये पूरी चीज समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ आप आते हो, बनाते हो एक रिपोर्ट जिसमें आप अपने पूरे एनालिसिस की फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हो। ओके, कई बार आप मैनेजमेंट के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देते हो, जहां आप अपने पूरे रिसर्च का विवरण देते हो और ये बताते हो कि पूरे रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकलता है। राइट, एंड फाइनल स्टेप होता है आपका मेकिंग द डिसीजन, और ये स्टेज है जो कि मैनेजमेंट फॉलो करता है। मैनेजमेंट को यहाँ डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन रिसर्चर के रिकमेंडेशंस पे। जो रिसर्चर ने स्टडी की, उसने जो कुछ भी पता लगाया, जो कुछ भी निष्कर्ष निकला, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर
मैनेजमेंट हो सकता है एक डिसीजन ले, या हो सकता है रिसर्चर की पूरी बात को खारिज भी कर दे। ये पूरी चीज, पूरा पावर मैनेजमेंट के हाथ में है, राइट। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है कि रिसर्च वाकई में काबिले तारीफ है, जिससे मैनेजमेंट को बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स मिले, तो वो बेशक इसको इंप्लीमेंट कर सकती है अगर उनके सारे रिसोर्सेस और सर्कमस्टेंसेस परमिट करें। कई बार हो सकता है कि रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट के पास रिसोर्सेस ना हो, ओके, सर्कमस्टेंसेस कंड्यूसिव ना हो, तो हो सकता है मैनेजमेंट इन रिकमेंडेशंस को खारिज कर सकती है या उनको पोस्टपोन भी कर सकती है। जब एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो, उस वक्त आपके जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर वो अमल करेगी, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा एक मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो So hope this was the small presentation in Hindi, and if you refer different reference book, this entire process of marketing research, many times any of the steps can be further elongated. So basic steps are 5, it may be 8, it may be 10, depending upon reference book. But as per our majority of the reference book, this research process is divided into 5 steps, and this further, each step can be further divided into another steps. So depending upon the reference book, the research process has been defined in various stages. So today I hope I try to explain in English as well as supporting in the video, and entire gamut of this marketing research process I try to give you in the narrated view in today's session. And thank you very much. Any doubt, any question if you are having, and I will still be having some five minutes in my session. So your questions or your doubts are most welcome. And thank you very much to join me today. Today we are having the second session on aviation finance and insurance. And today under the lesson plan of lesson number 27 under unit 3. Today we are going to discuss a last part, a case study of Indian aircraft leasing market. So join me again at 2:40, and thank you very much in this session. Have a good day. I am ending this session. If you don't have any question or any proposed discussion, so I am waiting for 1 or 2 more minutes, then I will end this session. So thank you very much for joining. If you have any question, please raise the question. So Ajay have joined in the last, I think so. So for the sake of Ajay, today we have concluded the research process, marketing research process in our discussion. And today I will try to upload this today's discussion in the form of video. So if you could not join our lecture, so I will share on our WhatsApp group. So you can take the benefit of today's discussion if you like, but try to join in the beginning of the session, so you may benefit it in our lecture, because you are very few student in final. This is your final semester, so I pray that you may score good marks so that you can have a good future perspective. So attending the lecture will definitely benefit to you while getting, you are not only clearing the examination, end semester examination, but also it will enhance your knowledge to get your future perspective in career. So with this word, thank you very much. Join me again at 2:40 in the lecture of aviation finance and insurance. Have a good day.